discuss this one. Total theorem on probability. For that, one small definition we'll see. Partition of sample space. Partition of sample space. First of all, we see the definition of this, and then we can move on to one important theorem that is called total theorem on probability. What is the definition? See here. A set of events, a set of events. सर आफ्टर द प्रॉब्लम्स ऑफ बायनोमियल यही टॉपिक है। ना आफ्टर नहीं है, ये टॉपिक अपना लेफ्ट था, मिस हो गया था। बायनोमियल ही कंटिन्यू है, मगर एक टॉपिक आपका लेफ्ट हो गया था। इसको कंप्लीट करेंगे पहले, तो फिर बायनोमियल को कंटिन्यू करेंगे। आज थोड़ा डिस्टर्बेंस भी है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम कर लेंगे, ठीक है ना। इट इज फ्रॉम फर्स्ट यूनिट ओनली। मैं भी देखा नोट्स में, ये एक टॉपिक अपना रह गया था, सिर्फ ये की थ्योरम कराने वाला हूँ मैं आज, क्योंकि मेरे को भी 10:30 से क्लास रहती। A set of events E1, E2 and so on En is said to be partition of sample space. Partition of sample space, capital S, if some of the conditions satisfied. Condition number one is EI intersection EJ is equals to empty set. There is no common element between these sets, that is the mean. We have already discussed this one in base theorem, but it is individually also given. E1 union E2 union E3 and so on. And so on up to En. If you take the union of all this, already we have discussed this one in base theorem, but still it is individually also we have to discuss. Third case will be probability of each I should be greater than 0. I repeat, this theorem is from the unit number 1. For all I is equals to 1, 2, 3 and so on up to n. Now with the help of example, I will explain this partition. Then I will move on to important theorem. Example. Suppose you see your capital S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 8. From this I am choosing one set which is called not A. You can call it as E1. E1 I am choosing a partition like that, 1, 2, 3. And E2 also I am choosing another partition from the superset S, that is taking 2. Not 2, we don't take 2. 1, 3, 3, 5, 7, we take. We'll be nailing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now tell me what happened if I am doing E1 intersection E2. Tell me what is the answer. E1 intersection E2 answer, tell me. No, we don't get anything. Empty set. Empty set, no common element. And now if you find out E1 union E2, what happened? Tell me. E1 union E2 means what? How to write union 1, 2, starting from the least element, we have to write in order, which is nothing but S only, no? Yes. So
This condition should satisfy, this condition should satisfy, and each EI should be greater than 0. 1 is greater than 0, no? 2 is greater than 0, 3 is greater than 0, 4 is greater than 0, 5 is greater than 0, 6 is greater than 0. Yes or no? All these are. So any set of events satisfying these three conditions, we say that it is a partition of the sample space. So E1 and E2 are called the partition of sample space capital S. So with connected to this one, we have to discuss an important theorem which is called, we have forget to discuss that theorem. That theorem name is total theorem on probability. मैं भूल गया था वहाँ पर, याद अभी आया हम देखने के बाद, तो अब इसको करें total theorem on probability. Total theorem on probability. Probability. So how the question will come in exam? State and prove total theorem and total theorem on probability. So statement you have to write down. Statement will not be given in your paper. Statement itself we have to write down. So how it will be? So this is statement is let, just 1 second थोड़ा charging लगा देता मैं, stop it. Yes, okay. Statement is let E1, comma E2, comma E3, and so on up to En be a partition, be a partition of a sample space, be a partition of sample space. Do you understand why I am taking sample space partition or separate definition? I think you got the idea. We should know what is partition. Then only we can go for the theorem proof. Correct? Partition का concept आपको पता होना चाहिए ना? Yes, sir. For all I is equals to, अब आपके सिलेबस में भी अगर आपके पास है तो अभी देखिए, यहाँ पर स्पेशली अलग से मेंशन करे हुआ है टोटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी. Probability of EI should be greater than 0. Let A, capital A, be any event, be any event associated associated with capital X. Then then you have to prove that probability of A is equals to probability of E1 into probability of A given E1. A given E1 means कुछ concept याद है आपको previously? This is nothing but conditional probability. Probability of Yes. E2
into probability of A given E2 plus and so on plus probability of En into probability of A given En. Or this one we can write in a summation form also. I is equals to 1 to n probability of Ei into probability of A given Ei, which is called the statement of this theorem. Proof is very easy. Proof is not difficult. Now look at the proof. Whatever I wrote as a statement, it is already available here. You see, even E2, E and so on are partition of the sample space. So you know the concept of partition also. Okay, na? And probability of Ei must be greater than 0. And any event which is also associated with capital S means in this superset S, A is also one of the event, E1 is also one of the event, E2 is also one of the event. Like that, we have so many events, and A is also one of the part of that event, right? Now we have to prove this thing. So we start. Since E1, E2, and so on, En, E1, comma E2, and so on, En is a partition. E1, E2, so on, En is a partition. Once it is confirmed that it is a partition, I can use all these three properties. Understand? This implies that this implies that you take the EI intersection EJ, you will get an empty set. You will get an empty set. And if you take the union of all these, E1, union E2, and so on, and so on, up to En, you will get your superset that is S. Okay. Now you can see I have given this example before also. Suppose this is S. For your convenience, I am giving this example. Suppose if I am considering A is also one of the part now. Suppose A is equal to 1 and 2. Okay. And S is this one. What happened if I am finding A intersection S? Is nothing but A only, no? Yes. Yes. This concept already we used where we have used this concept in कहाँ पर यूज करे बोलिए बेस थ्योरम में भी यूज कर चुके हैं ओके Yes. अब उसको रिवाइज कर रहे हैं ना आप नोट्स आप रिवाइज कर रहे हैं ना Yes. जब भी आपका शेड्यूल आएंगे ना टाइम टेबल उसके बाद एक 10-15 डेज आपको 2 वीक्स ही टाइम रहेगा नहीं अभी आप वेट करने में ही है अभी देखेंगे अभी सोचेंगे अभी तो नहीं सो लेट अस टेक दिस कॉन्सेप्ट A is equal to A intersection S, then this is equal to A intersection S value, see the previous one. This is our S value, no? E1 union, actually union will come here, E2 union, and so on, union here. This is the definition of partition, this one. We use here. In place of S, we are writing E1 union E2 union E3 and so on up to here. Got it? Now this is equal to, we multiply with A. What happened? Tell me. A intersection E1, Even A yes, intersection union
बोलिए। ए इंटरसेक्शन intersection E2 E2 union. union and so on. So, Union A intersection En. Correct? yes. Yes. Okay. Now this is the value of it. Taking probability on both sides. Probability when you are applying, the advantage of probability applying, union will be converted to addition. ये बात अब मैं कई बार बोल चुका हूँ. A intersection E1, once applying probability, union will be converted to addition plus probability of A intersection E2 plus and so on plus probability of A intersection En. Okay. Now this is equal to here. For this one, if I am using the definition of conditional probability, this rough column will give you कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन अप्लाई करेंगे. ए इंटरसेक्शन ई आई, ए गिवन ई आई की वैल्यू बोली बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. टेल मी दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन की कर रहे हैं तो यहाँ पर अपन ई वन ही लिख देंगे. ई वन देन इट इज कैन बी रिटन एज बोले अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन ई वन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन. सर नो, वी हैव ऑलरेडी Yes. डिस्कस ना. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर यूज करना, करेंगे यूज. चलिए. This is equal. Cross multiply and use it means we can write it as probability of E1 into probability of a given E1 plus this is probability of E2 into probability of a given E2. इसे लिख सकते हैं plus and so on. For this how to write, tell me. Probability of En into probability of a given En. I'm correct here? Yes. Hello. Give me the answer. Let's see. देखिए अब ये रिजल्ट आपको प्रूव हो चुका है ऑलरेडी, जो आपको प्रूव करना है. बट इसको अगर आप चाहे तो समीशन फॉर्म में लिखिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, इफ यू वांट यू कैन राइट. आज के आज में इसकी प्रैक्टिस हो जाना है. और अपन कितने थ्योरम्स फर्स्ट यूनिट में आपको करना क्या है, मैं आपको एक बार छोटा सा रिवीजन कर देता हूँ. फर्स्ट यूनिट में आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम, बेस थ्योरम के ऊपर प्रॉब्लम्स और उससे रिलेटेड थ्योरम, थ्योरम एंड प्रॉब्लम दोनों भी आपको प्रैक्टिस कर लेना. मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम, बेस थ्योरम एंड टोटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी. और इसमें एक छोटे डेफिनेशन है. एक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दूसरा है इंडिपेंडेंट यूएस. इसके ऊपर से आपको फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाता है. सेकंड यूनिट में अपने को रैंडम वेरिएबल करना है. रैंडम वेरिएबल में बायनोमियल थ्योरम जो आपका कंटिन्यू चल रहा है. अभी नेक्स्ट क्लास आपकी बायनोमियल थ्योरम पे ही मैं करता हूँ. ये एक थ्योरम अपना डिस्कशन में मिस हो गया था, मेरे को इत्तेफाक से याद आ गया तो मैं इसको कंप्लीट कर दिया. आपके सिलेबस में है, देखिए. ठीक है. फिर आपने सर जो क्लास. जी. वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की प्रॉब्लम. हाँ, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे भी प्रॉब्लम करना है नहीं. देखेंगे आज ही करेंगे. अगर मेरे को कुछ और टाइम मिल गया आज ही, तो अपन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे भी आज ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे. हाँ? करके फिर अपना बायनोमियल कंटिन्यू रखेंगे. राइट. ओके. ठीक है. इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि एक और सेशन के लिए टाइम निकालने के लिए. ओके. ओके. अभी तो मैं इसको एंड अप कर दे रहा हूँ. क्लास आज थोड़ा ओके. स्टार्ट करने में भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया. हाँ. ठीक है.